So now tell me what is the job role of Anti-Corruption Bureau? So basically, the job role of Anti-Corruption Bureau is to spread awareness about anti-corruption, the first foremost role, and so secondly, it is to uh, catch the victims, those who are charged by corruption cases. So these two are the major roles. Mhm. And tell me 5 solutions to eradicate corruption in our Indian political system. Okay. Mm. Yes, sir. So the first, I feel, sir, the legal framework which is already into existence. For example, the Prevention of Corruption Act 1988. For example, the Prevention of Money Laundering Act 2002. So this should be implemented in a efficient way. That is the first. Secondly, sir, proper implementation of legal framework as well, sir. For example, the CVCs, the Central Vigilance Commission, and sir, the bodies such as Lokayuks and this. So thirdly, I feel the general citizens should be empowered, sir. Like, for example, they are responsible for they are responsible for the corruption activities, so they should be empowered. They should be sir. These three I can recall. Okay. So, why are you coming in such type of only executive type of job? As you have engineering background, why you don't become a successful engineer? Yes, sir. So I was very sure during my college days itself that I want to go to the government sector jobs and not in the engineering. And sir, specifically speaking about IB, it did not demand any backing or any professional qualification as you should be only engineer or you should be only BA graduates or like that. It demands the variety of students, so I feel IB is suitable job for me. Then why you have completed your bachelor in engineering only? You can go in a BA, you can go BSc. Then I think there must be any purpose to complete engineering degree. Yes, sir. So engineering degree gives me a backing for my other career options as well, because the government jobs are very uncertain. For example, the competitive exams are very uncertain. So I need to have a proper backing, and engineering, being an engineering graduate gives me a extraordinary backing that I will be settled somewhere or the other if I'm not able to get into the government jobs. Okay, now I have a prediction and I have seen also future that you will not be selected in IBHIU. Then what will you do? Sir, if I'm unfortunately if I'm not selected for IBACIO, so I will further use government exams or other government exams where I can excel. Which one? For example, sir, I can I am continuing giving the state services exams, the UPSC exams. Yes, I will further give those exams. देखो ये वाला जो सवाल था ना, फर्स्टली इसको डिनाई किया करो। जब आपको बोला जाए कि नहीं आप तो बेकार हो, आपको तो हम ले ही नहीं पाएंगे, आप तो फेल ही हो जाओगे, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है आपके माइंड का। ये मैंने अपनी तरफ से बोला, ठीक है? लिसन बट सो यू आस्क फॉर द अल्टरनेटिव। नो नॉट, इसको पहले डिनाई किया जाता है। फर्स्ट टाइम बोली कि सर आई डोंट थिंक दैट आई विल नॉट बी सिलेक्टेड बिकॉज आई हैव done 100% from my side. But if there are any cases, as you have told me, because earlier I haven't thought about it, क्योंकि इसके पहले मैं नेगेटिव सोच के रखा ही नहीं था। बट राइट नाउ यू हैव सेड, देन इम्प्रूव करना चाहूंगा और या फिर इंडियन पुलिस सर्विस की तरफ मूव करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आप ओवर एज भी होने वाले हैं IBACIO के लिए। श्योर सर, थैंक यू। है ना? लेकिन पहले स्ट्रांगली इसको डिनाई करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस 100% ऐसे होते हैं जो निगेटिव एस्पेक्ट वाले होते हैं और वो पॉजिटिव मैनर में छोड़े जाते हैं आपके ऊपर, और आप अगर उनको सेम वैसे ही कैप्चर कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये आपकी पर्सनालिटी को डाउन करता है। हाउ टू प्रोसीड द आंसर? फॉर एग्जांपल, शुड आई से सर आई वुड लाइक टू पोलाइटली डिनाई, लाइक yes sir,
Sir, respectfully, sir, I haven't any idea about not selected because I have done my 100% and I'm also optimistic to get, and I have also a prediction and also seen a future that you will not be selected in IBSCS. Then what is your plan B? So I would like to politely disagree on this fact. So because I think I have given my 100% for this preparation of these exams. I have qualified the prelims as well as the mains exams. Mhm. So I think I am suitable for the IBSCIO post. Mhm. But if your wisdom tells that I am not suitable, then you cannot select me. So is it fine? नहीं, आपने इसको कैसे उल्टा पुल्टा कर दिया? नहीं, इसको Okay, ऐसे so बोल wisdom. Okay. नहीं Hmm. नहीं, लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी फर्स्ट लाइन है उसको चेंज करिए। बोलिए कि टिल नाउ आई हैवंट एनी आइडिया टू नॉट गेट सिलेक्शन इन दैट। मैंने Sure. ऐसा अभी सोचा नहीं, ऐसा मैंने प्लान नहीं किया है, क्योंकि आई एम So I never प्लानिंग thought of getting rejected from IB, right? Yeah. just because I am planning to be selected in that organization. I am not planning to Sure, not sir. to be selected in that there. Okay? Right, right. हाँ, आप ये चीज बोलेंगे तो चलिए बोलिए फिर Yes, से sir. बोलिए। Yes, sir. So can you ask the question? Yeah. So, I have seen future that you will not be selected in IBA. Yeah, sorry. But your voice is not clear. So yes, sir. Am I audible Yes, now? yes. Now okay. Now okay. Yes. So Thank you, sir. Thank you. I have seen a future that you will not be selected in IBA CIO. Then what will be your plan B? Yes, sir. Hmm. So I have not thought about that I will not be selected in IB. Mhm. So as I have given my 100%, I have qualified the prelims as well as mains exams. Mhm. So I have not thought of the plan B as per such. So but I feel Mhm. if I'm not No, no, selected at all, then not so I, I will. no, not I feel. बोले कि as you have told me that Okay, if I right. So as yeah, so as you have told me that what are your other plans other than IB, so then I will continue giving the other exams, government exams, sir, yes, such as UPSC and MPSC. ये परफेक्ट आंसर है, क्योंकि इसने Right. आपके पॉजिटिवनेस को और ऑप्टिमिस्टिक वे को भी रिप्रेजेंट किया और ये भी बताया कि आप इमीडिएट डिसीजन भी ले सकते हैं, कि आपको तुरंत इमीडिएट डिसीजन लेने को Sure. आगे, ठीक है ना? ये दोनों पॉइंट Right, इसमें sir. Right. added है। Right. Thank you, sir. Thank you very much. It's okay, it's okay. Now tell me the prime features of leadership. So prime features of leadership. Yes. Yes, sir. So the prime features of leadership, I believe, sir, the individual who is the leader, he should be connected to each and other individuals who are the members. So secondly, he should be able to tackle the emergency situations, sir. Most importantly. So thirdly, he should be able to know each and every person that that they should follow him. Like for example, he should be a good motivation speaker as well. That the group of people will follow him. Fourthly, I feel, sir, he should be intelligent at work. That I mean to say, he should efficiently and effectively work for people, so that he should sustain as a leader for long time. Yes, sir. This all I can recall. Okay, and tell me some types of leadership. So I'm sorry, sir. I'm not aware about the types of leadership, but sir, I will definitely look into it. Okay, so tell me that which type of leadership is good for our Indian policing system. Yes, sir. So types of leadership, sir, I'm not aware. Can you, sir, define the question in some other format? टाइप्स ऑफ लीडरशिप के कई टाइप्स होते हैं, पढ़िएगा आप, ठीक है? नाउ कम टू
Now come to some rapid fire questions. Okay, veg or non-veg? Sure, sir. So both. Not select one. Veg or non-veg? Non-veg, non-veg, non-veg. Boy, girl. So girl, Dog, lion. lion. Narendra Modi, Rahul Gandhi. So Narendra Modi. YSR Reddy, Narendra Modi. So Narendra Modi. Sonia Gandhi, Narendra Modi. Sonia Gandhi. IPS, IBACIU. IBFEIU. IAS, IPS. IPS. Father, mother. Mother. Brother, sister. Sister. Mobile, laptop. Laptop. Girlfriend, wife. Wife. Wife, okay. Are you married? No, sir. I'm not married. Okay. Are you in a relationship or not? Yes, I am in a relationship. Okay. Then how long it is going? So it's been 5 years now. Okay. Then what are the future plans? So future plan is first to get settled, both to get settled, and so then to marry. Okay. Your family members know about it or not? Yes, sir. Both the family members know about each other. Okay. And they have allowed. Yes, sir. They are okay with it. Okay. Okay. All right. So SRT, एक SRT है आपके लिए. You are working Sure. in Intelligence Bureau office, and your senior office has sent an assistant to you to assist you in your office. Right. ठीक Yes, ठीक है. sir. भेजा. Now उसने गेट पे नॉक किया, आपने देखा और देखते ही आप उसको पहचान गए, और पहचान इस मैनर से गए क्योंकि वो आपकी एक्स है, और वो ऐसी एक्स है कि आप दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई है, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो, एक दूसरे को बाहर मिलोगे तो खा जाओगे, बट वो अनफॉर्चुनेटली आपके ऑफिस में खड़ी है आपको असिस्ट करने के लिए, और आपके सीनियर ऑफिसर ने भेजा है. व्हाट विल यू डू? So I will definitely work in coordination with her. So that is my past, sir. I will not bring it in my present, sir, and it has nothing to do with my professional work, sir. No, I will follow my duty as it is given. No, wait. There is high chance to have fight with that girl in that office premises. Yes, sir. So I will first politely talk to her that this is not the place to fight. We can handle our issues outside the premise as well. The duty is being given to us. Firstly, we will ensure that our duty has been fulfilled, and then we will speak politely to each other, and we will not fight. Okay. We'll try that we will not fight. Okay, good. Now another SRT for you that लाइफ में घुसना चाहेंगे, तो आप वहां पे डिनाई भी कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली कि सर रिस्पेक्टफुली इट इज माय सम प्राइवेट काइंड ऑफ थिंग, रिस्पेक्टफुली आई डोंट वांट टू शेयर विद यू दिस. क्योंकि इंटरव्यू का अपना एक लेवल होता है, एक लहजा होता है, इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक लेवल होता है. सर इफ द हाँ बोलिए. Sir, if the interviewer is insisting on the asking it again and again, for example, sir, you asked it second time. Yes. So how should we deny it? आप watching porn वाला. Yes, sir. For example, if I say I am not able to reveal my personal life, then again you ask, no, you have to tell me. Then what to do, sir? Because sir, they are the high individuals. We should answer them. चाहे जितने इंडिविजुअल हों, हमारा तो इंट्रोगेशन नहीं चल रहा है, हमारा इंटरव्यू चल रहा है. Exactly. हमारे भी कुछ राइट्स Exactly. हैं, हमारी भी कुछ प्राइवेसी है, ठीक है ना? तो आप exactly, sir. Yeah.
आप उन चीजों को रिवील करिएगा जो एक प्लेटफॉर्म पर ओपनली, वहां पे देखिए मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, है ना, मैन भी होंगी, वीमेन भी होंगी, लेडीज भी होंगी वहां पे। तो आपको Right, ऐसी चीजें right, sir. रिवील नहीं करनी It looks wrong. Yeah, it है। looks wrong. Right, sir. लुक्स रंग, और आपका Exactly. मजाक बन जाएगा। ये चीज आप अपने दोस्तों से बता Sure, सकते sir. हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बता सकते हैं, Right. आप अपनी मदर से Exactly. Yeah. और फादर से नहीं बता सकते। No. तो Right, sir. Right. जो चीज आप अपने मदर और फादर से रिवील कर सकते हैं जिस मैनर में, वैसा आप कर सकते हैं। आपकी मम्मी पूछती है ना कि बेटा शादी करोगे, तो आप मुस्कुरा के चले जाते हो, तो वो आपके अंदर की जो, Right. ठीक है। लेकिन जब मेच्योरिटी वाली बात आती है, तब बैठ के आप डिस्कस करते हो, यस आई वांट टू डू मैरिज बट राइट, नॉट राइट नाउ, आफ्टर, Sure, sir. श्योर ना। So denial will be the best option in this such types of questions, right? देखिए वॉचिंग पोर्न पे आप डिनाई नहीं कर सकते। वॉचिंग पोर्न को बता Right, दीजिए sir. कि गवर्नमेंट ने बैन वैन कर रखा था इसको, तो बचपन में हमने कभी देखा था, हमारे फ्रेंड्स ने दिखाई थी, लेकिन आई एम नॉट एडिक्टेड, आई एम नॉट ए रेगुलर वॉचर, मतलब मैं रेगुलर व्यूअर नहीं हूँ, Right. मैं इसको बिल्कुल नहीं Yes. देखता हूँ। और आई थिंक कि 4 से 5 साल हो चुके होंगे, कॉलेज टाइम में मैंने तब देखा था, और फिर उसके बाद मुझे कभी नीड नहीं लगी, क्योंकि आई एम ऑलवेज बिजी विद माई वर्क, विद माई स्टडी, विद माई होमवर्क, विद माई मदर, विद माई फादर, विद माई फ्रेंड्स। आई हैव गर्लफ्रेंड, Right. गर्लफ्रेंड को बोल सकते हो, क्योंकि गर्लफ्रेंड रखना कोई गलत बात नहीं है, बट हाँ, लेकिन Right, sir. Right. बट उसके पीछे के जो क्रॉस क्वेश्चंस आने हैं, उसके पीछे के जो क्रॉस क्वेश्चंस Yeah. आने हैं, उनको डिफेंड करने का भाई आपके अंदर गट्स होना चाहिए, तभी चीजें रिवील करिए। Right. Right, sir. मोमेंट है आपकी, Right. Right. प्राइवेट मोमेंट को हाइड करने का, सीक्रेट रखने का हमें कॉन्स्टिट्यूशनली राइट मिला हुआ है, ठीक है। Right, sir. हाँ, तो आपने कितनी बार सेक्स किया, कितनी बार नहीं किया, कितनी बार उनसे मिले, कितनी बार नहीं मिले, ये सब आपका पर्सनल है, इंटरव्यूअर आपसे Yes, sir. पर्सनल नहीं हो सकता। इसी तरह जब आप ये वाले आंसर पे पहुंच गए हैं ना, तो फिर आगे के सारे रास्ते बंद, फिर इंटरव्यूअर आपको परेशान नहीं कर सकता। Yes, sir. They will go to different questions, right? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप लोग महीने में कितने बार मुलाकात करते हैं, जस्ट मीटिंग? Yes, sir. Yes, sir. So we do meet once in a month, sir. once in a month, then what you do? Yes. Just Yes, meeting sir. or We do. No, sir. We do meet in a cafe. We do have coffee together. We do have tea, and we do have some snack together. We talk about each other's life, what is going in each other's life, and uh, we do plan to meet next time as well, as soon as possible. okay? So when you are away from your girlfriend, then how can you pacify your sexual desires? So I don't have such sexual desires as such. So it happens. Sexual desires for me is natural in process, sir. Whenever we are together, yes, sir, it's natural in process, sir. Then haven't I do not get sexually attracted to other women except my girlfriend, sir. okay, तो आपने कभी उनके साथ सेक्स परफॉर्म किया हुआ है? So sorry, sir. This is my personal life, so I cannot reveal it to you. Respectfully, I don't want to share with you. Yeah, right. चलिए, आप अब समझ गए हैं इस चीज को कैसे जवाब देना है ना? Yes, sir. Yes, sir. Right. चलिए तब डिस्कनेक्ट करते हैं यार, 5 घंटे हो गए बैठे बैठे। Sure, sir. हाँ? Sure. चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.